Okay, let's wait for one or 2 minutes. Asana, you were in this test. Asana, tum the? No, sir, I was not able to give the test today. You attempted this test, section test or not? No, sir, no. It should have been there. No? कोई बात नहीं. Next test, you please ensure your presence. So I'm going to discuss the answers of today's general awareness test, especially meant for TISSNET 2023, and some other exams also, like Z and IFT also. Though then the very first question was that Niti Aayog released the Northeastern Region District Sustainable Development Goal Index with support from which institution? In general, we all know that it is UNDP. Yes, sir. This has been written over here. It is UNDP. And I can show you the responses of all of you. So, फ्रूटी गुप्ता, कौन है फ्रूटी गुप्ता? 40 में से 18 सवाल सही हुए हैं. अंजलि 40 में से 19, योगेश्वरन 40 में से 26, अंशुला 40 में से 12. अजय थॉमस, चलिए आप मत देखिए, आप ये देखिए. हाँ, next. The very first question we all know, and we all know that United Nations development. There are several agencies which, in general, involve across world, and along with the association of associating themselves with that of the all world countries to contribute to achieve the sustainable development goals. And I had discussed with you a separate list of sustainable development goals Yes, in sir. one of my lectures somewhere in past. You know? Yes, sir. Yes, sir. Thereafter, the next question was Major Dhyanchand Sports University will be established. तो ये भी मैंने आपको बताया था शायद पूरे अभी जल्दी में ही ये यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया था. मतलब शिलान्यास जिसको बोलते हैं, लेड द फाउंडेशन स्टोन इन मेरठ, इन सरदना. मेरठ सरदना में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो ओपन की जाएगी. दिस वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? This is the basically a bank which carries a pool of fund basically, and help in development of Asian countries, where countries can find the fund. तो जो वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं वो उर्जित पटेल हैं. ठीक है. Thereafter, the fourth question is नेशनल स्टार्टअप डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वो हमें पता है 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है. Since government has shown a very committed sense for making a country a manufacturing hub, and also patronizing the startup ecosystem. So to commemorate, you can say the commemorate, or to foster this ecosystem.
तो 16 जनवरी जो है वो तारीख है जब ये दिन मनाया जाता है। उसके बाद विच प्लेयर won the India Open Tournament 2022? It was Chirag City. Which player won the Indian Open Tournament 2022? Chirag City. ये डिफरेंट स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं। आपसे मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं आप ये जरूर याद रखिए कि किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं और वो किस लेवल तक का टूर्नामेंट वो खेलते हैं या खेल चुके हैं। ठीक है। Thereafter, N. Chandrasekharan has been appointed as a new chief executive officer and managing director of Air India. अब एयर इंडिया को टेक ओवर किया है किसने? टाटा ने और चंद्रशेखरन साहब को जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। उसके बाद a new species of dwarf catfish named Pseudolagovia vespa was discovered in Milak River in which state? ये आप इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का पीस ऑफ न्यूज कह सकते हैं। A new species of dwarf catfish named Pseudolagovia vespa was discovered in Milak River in the state of Nagaland. So the member of this genus are small catfishes present in hill streams and rivers in Ganges and Brahmaputra drainages in Nepal, India and Bangladesh. The Irrawaddy and setting drainages in the Myanmar and Western Ghats Peninsula, India. Vespa is derived from the Latin word vespa means wasp. Wasp मतलब समझते हैं आप किसको बोलते हैं? सर एक इंसेक्ट होता है ना। वास्प इन जनरल जो ततैया होता है ना, हिंदी में ततैया बोलते हैं उसको। मतलब आपने देखा होगा हमारे आसपास वास्प होते हैं, मतलब जो डंक मार देते हैं, ठीक है, उनको वास्प बोलते हैं। तो ये उस स्पीसी है, वो उस पर्टिकुलर फाइलम से बिलोंग करता है। Thereafter, question number 8 is what is the rank of India in UNDP Human Development Index 2021? It is 132. So India ranked 132 among 191 countries and territories in 2021 HDI as per UNDP United Nations Development Program, and decline in countries रैंकिंग। कंट्री की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग है 2021 में डिक्लाइन हुई है। उसके बिहाइंड पेंडेमिक है, काफी बड़ा रीजन, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंटल एफर्ट्स हैं या जो इनिशिएटिव्स हैं या तो स्कीम्स हैं या तो पॉलिसीज हैं वो बेनिफिशियरीज तक नहीं पहुंच पाई पिछले 2 साल के अंदर। दैट्स व्हाई कंट्री का जो इंडेक्स में रैंकिंग है वो ड्रॉप हुआ। Western disturbance, which was seen in news recently, is associated with meteorological phenomena है, हम जानते हैं इसे। Western disturbance is an extra tropical storm originating in Mediterranean region. It is said to bring winter rain. सर्दियों में जो बारिश होती है वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रेडिक्टेड an intense western disturbance to affect the northwestern India, जो पिछले साल हमने देखा था। Later it also predicted 2 western disturbances would bring rain across northwest India and western Himalayan region for few days. ये 2022 के स्टार्टिंग में जो जनवरी और फरवरी के आसपास जो डिस्टर्बेंस आपने इस साल महसूस किया होगा, it was related to that. So western disturbance basically meteorological phenomena है और ये विंड स्पेसिफिक है। ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड माइक्रोप्रोसेसर ऑफ इंडिया? जो भारत में पहली बार माइक्रोप्रोसेसर डेवलप हुआ है। इन जनरल इंडिया के अंदर माइक्रोप्रोसेसर जो है वो डिजाइन तो होते हैं, अभी हालांकि मैन्युफैक्चर नहीं हुए हैं, लेकिन इंडिजिनियसली माइक्रोप्रोसेसर जो है वो डेवलप भी नहीं किए गए थे। तो प्रोफेसर वी Kamakoti designed India's first indigenously developed microprocessor Sakti, and he has been appointed as the new director of IIT Madras also.
सो माइक्रो प्रोसेसर आप लोग समझते होंगे, यस सर। कंप्यूटर के अंदर लगा होता है माइक्रो प्रोसेसर, वी ऑल नो दैट। इसके साथ साथ एक वर्ड और होता है माइक्रो कंट्रोलर। तो अगर जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं या जो हमारे एयर कंडीशनर्स हैं या और जो इक्विपमेंट्स हैं जो जिनको हम वाइड कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं, उनके अंदर जो डिवाइस लगी हुई होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलिंग इलेक्ट्रॉनिक जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उनको माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर आर रादर bigger electronic high processing electronic devices or circuits which may process larger amount of data, while microcontroller may process smaller amount of data। और आपने कुछ एक माइक्रो कंट्रोलर का आपने नाम सुना भी होगा जो स्टूडेंट के लेवल पे यूज होते हैं, जैसे बताओगे आप मुझे? हाँ, आर्डिनो का नाम सुना है? नो सर। Yes, sir. आर्डिनो का नाम नहीं सुना आपने? हाँ, ये एक्सपेरिमेंटल और स्टूडेंट स्पेसिफिक कुछ एक माइक्रो प्रोसेसर है। और रेस्पबेरी पाई सुना है ना? यस सर, ये तो सुना है। हाँ, रेस्पबेरी पाई, आर्डिनो, ये दो बहुत वाइडली यूज्ड। जैसे अगर हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं तो दो बड़ी माइक्रो प्रोसेसर हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी कंप्यूटर में? एक इंटेल जो कॉर्पोरेशन का है, यस है ना, इंटेल कॉर्पोरेशन का है, और दूसरा AMD का है, ठीक है ना। तो ये माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। देयर आर सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ओरांग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच यूनियन टेरिटरी इन स्टेट? ओरांग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन Assam, and Assam at the north bank of river Brahmaputra. It was previously called Rajiv Gandhi Orang National Park. The government has recently issued notification to make Orang National Park more than thrice its existing size. तो उसके size को बढ़ाने का बात किया है। Assam government has issued notification for adding to 232 square kilometer to 78.82 square kilometer park. So gharials may be introduced in the area to be added to Orang. तो gharials को Orang National Park में ऐड किया जा सकता है। Which institution is related to Integrity Pact? Integrity Pact basically is related to Central Vigilance Commission. Yes, has revised its standard operating procedure for adopting and implementing Integrity Pact. It basically, आप लोगों में से कुछ लोगों ने इंटीग्रिटी की ओथ भी ली होगी somewhere. That appeal must have been made by Central Vigilance Commission through banking and other agencies also. So it has been revised second time in 8 months. The step aims to ensure the transparency in public procurements and to provide large number of independent external monitors to examine the government contracts. There are several kinds of oaths are there, and out of that there is an integrity. सर, हाँ, इधर एक्सटर्नल मॉनिटर से क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ONGC कोई खरीदारी करती है ना, या अगर मान लीजिए इंडियन रेलवे कोई खरीदारी करती है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंसी उसको मॉनिटर करेगी। That will not be in the control of either the Ministry of Railways or the agencies or institutions concerned with the railways or ONGC. कोई भी इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर जो है वो एग्जामिन करेगा गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, ठीक है। It may be any judicial body which may not be the part of it may be any particular committee framed by the parliament, or it may be a combination of private and government bodies looking into the contract signed by the government public sector units, government or public sector units. Thereafter, which ministry released the pictorial book titled India's Women Unsung Heroes of Freedom Struggle? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने रिलीज की थी ये किताब।
पिक्टोरियल बुक आजादी का अमृत महोत्सव में जो देश में फ्रीडम स्ट्रगल में जो वीमेन कंट्रीब्यूटर्स थी उनके लिए, उनको याद करने के लिए ये बुक रिलीज की गई। प्रोपगेशन ऑफ असेंबली मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रोपगेशन ऑफ असेंबली, prorogation, not propagation. Prorogation of assembly means which of the following? It is discontinuing a legislative assembly without dissolving. So what connotation prorogation is giving us here? So interrupting. कोई डिस्टर्बेंस हो जाती है ड्यूरिंग असेंबली तो स्पीकर डिसॉल्व करने के से पहले डिसॉल्व ही तो नहीं करते हैं, क्या करते हैं? पोस्टपोन करते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ without dissolving. Yes, without dissolving, procrastinating the proceedings of the assembly, है ना? Without procrastinating the process of assembly to some other time in future. It may be a next day or it may be 7 days or more than that. Prorogation means it's basically a procrastination. So West Bengal Governor Jagdeep Dhankar prorogued the state legislative assembly with effect from February 12 after exercising power vested with him under the Article 174 of the Constitution. The state government will have to take permission from the government to commence the next session of the assembly. So वेस्ट बंगाल के गवर्नर जो थे जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने स्टेट असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली जो वेस्ट बंगाल की थी, the governor is considered to be the pro to the central government, so that particular intervention was done by the governor of West Bengal. सर हाँ जी बताइए। सर जीके के अंदर स्टैटिक जीके का कितना वेटेज रहता है? स्टैटिक, ये अभी ये वाला जो आप देख रहे हो, ये कायदे में प्रोरोगेशन ऑफ असेंबली किस चीज का पार्ट है? सर पॉलिटी का। ये स्टैटिक का पार्ट है ना? हाँ सर, मतलब स्टैटिक ये पॉलिटी का पार्ट है, बट स्टैटिक, ये प्रोविजन स्टैटिक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन हम इसको करंट अफेयर्स में डिस्कस कर रहे हैं। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अभी रिसेंटली हुआ इसलिए, क्योंकि वो जो स्टैटिक एस्पेक्ट हैं वो करंट कंटेम्परेरी डेवलपमेंट्स में कहीं ना कहीं न्यूज में आए हैं। यस सर। और वो डिस्प्यूटेबल हुए हैं, या तो वो किसी तरह से प्रोमिनेंस उनको मिली है किसी पर्टिकुलर चेंज की वजह से, तो सिर्फ इसी वजह से, इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा। बट ऑन द अदर साइड, अगर हमें स्टैटिक की जानकारी हो तो वी कैन कीप दीज डेवलपमेंट, मतलब रिकॉर्ड वैल्यू बढ़ जाती है। ओके सर, बात एक ही है, ठीक है ना? सो इस we cannot rely only on the current affairs. We have to somewhere club static with that of the current affairs and current affairs with that of the static. Okay sir. ठीक है ना? Next. Thereafter, which of the following is the capital account component of balance of payment? It is the foreign direct investment. Foreign direct investment is the capital account component of balance of payment. During the period of April to December 2021, total FDI received by the India stood at this much of dollar, which was this much percentage lower than the compared to the corresponding period of the last year. Sorry, corresponding period of the same year, means same quarter, but year may be different. Thereafter, computer software and hardware witnessed the highest FDI equity inflow, and other major sectors like manufacturing, communication service, retail, and wholesale trade have registered considerable inflow. So, the capital account component of balance of payment, इनमें से कौन सा चार में से कैपिटल अकाउंट कंपोनेंट है बीओपी का? दैट इज एफडीआई। Mumbai docks, which were seen in news, is a bread of which state?
It belongs to Tamil Nadu. Indian Council of Agriculture Research and National Bureau of Animal Genetic Resource, ICAR and NVAGR, launched the study of the Kumbai dogs. The study of the breed has been launched. Under the project to document the indigenous dog breeds. And ICAR has already registered Rajapalyam and Chippi Parai dogs in Tamil Nadu and Mudol Hound of Karnataka. So, what is the theme of World Wildlife Day 2022? In general, मैं आपसे current affairs में themes भी discuss करता हूँ. So, it is the recovering the key species for ecosystem restoration. 3rd March is celebrated as the World Wildlife Day by the United Nations, and this year the theme of World Wildlife Day was recovering key species for ecosystem restoration. Thereafter, question number 18, Thayyam or Kaliyattam is a ritual dance performed in which state? It is in Kerala. जैसे मोहिनीअट्टम है ना, तो ये कुछ हद तक आपको कई बार मतलब सिक्स सेंस टाइप आप इसको यूज कर सकते हो. अदरवाइज वैसे मैंने आपको बहुत डिटेल में सारे जो फोक डांस है वो बताए भी हैं, ठीक है ना. जो क्लासिकल डांस तो मैंने आपको डिटेल में बताया, फोक डांस भी मैंने आपको पढ़ाए हैं जिस वक्त मैंने आपको कल्चर का स्टैटिक पार्ट पढ़ा रहा था. Thereafter, so Thayyam or Kaliyattam is a 800-year-old ritual dance performed in the state of Kerala. It exhibits folk dance art and thereby displaying the ancient tribal culture. The various types of Thayyams are performed during the course of the festival. Ritual dance Agni Kanda Karnan Thayyam has begun at the Kaliyattam festival in Kunur, Kerala. This document will be available to all of you so that you can review once again and keep that in recollection. Thereafter, question number 19. Indian grey hornbill was recently introduced in which sanctuary? It was in Gir National Park, Gujarat. So, forest authorities have released 20 Indian grey hornbills into Gir National Park in Gujarat in October to reintroduce the species. The species was seen at the sanctuary several decades back. 2 male birds among those were released with solar-powered satellite transmitters. As many as 10 out of 62 species are found in Indian subcontinent. Thereafter, what does Article 176 of the Constitution deals with? So, Article 176 of the Constitution deals with the governor's address in both the house of the state. Again, this is a kind of static piece of general awareness, but it was in news since the government of Telangana has announced a decision to conducting the budget session of the legislature without customary governor's address. Thereafter comes the question number 21. Which institution recommends grants to be released to rural local bodies? It is B. Finance Commission. So the 15th Finance Commission recommended grants to be released to the states, including grants to the rural local bodies like panchayats. After question number 22, who became first state to introduce carbon neutral farming method? It is Kerala. Question number 23, the book Wrist Assured and Autobiography is on the life of which cricketer? It is on the Gundappa Vishwanath. Thereafter, question number 24, which is the type of GST tax?
Indirect. It is indirect tax. Goods and service tax is a type of indirect tax. Question number 25. Which of the following satellite has been launched by ISRO? PSLV Polar Satellite Launch Vehicle CS-52 in the month of February 2022. It is EOS-4. Thereafter, 216 feet tall Statue of Equality has been inaugurated in Hyderabad in the memory of रामानुजाचार्य. कौन थे? सर इनका पूरा नाम आचार्य है. हाँ, सर इनका पूरा नाम रामानुजाचार्य. हाँ, कुछ बोल रहे हो? नहीं सर. कौन थे वैसे रामानुजाचार्य? कुछ पता है इनके बारे में? सर कोई सेंट थे. सेंट थे या मैथमेटिशियन थे? मैथमेटिशियन. और मैथमेटिशियन सेंट. चलो देख लेना और अच्छे से. यूनियन गवर्नमेंट्स पहल स्कीम इज रिलेटेड टू LPG subsidy transfer to consumer. Thereafter, 28. Which of the following won the 57th Jnanpith Award? Konkani novelist Damodar Muju. 29th, DTH operator Tata Sky has been rebranded itself Tata Play. The first geopark will be developed in Jabalpur, the bank of river Narmada. Desh ke mentor is the new scheme introduced by which state? We all know that is the New Delhi. Delhi government's flagship Desh ke mentor program aims to support government school students in their career planning stages. Thereafter, Sarul Festival is prominently celebrated in which Indian state? It is in Jharkhand. Sarul Festival is most popular tribal celebration across state of Jharkhand region. It denotes the beginning of New Year. It falls on the April 4th. This year it happened on the April 4th. It is usually celebrated by tribal community of local Sarna region, especially by the Munda, Ho, and Orang tribes. Munda, Ho, and Orang tribes are basically found in Jharkhand. 33. Which is the first Hindi novel to be shortlisted for International Booker Prize? Author Gitanjali Sri's novel Tomb of the Sand, Ret Samadhi. Tomb of the Sand, Ret Samadhi के लिए गीतांजलि श्री जी को बुकर प्राइज मिला. दीपिका पालीकल, who won the mixed doubles and women's double title recently, play which game? Squash. Ravi Kumar Dhaya in recently in news, the wrestler, Indian wrestler. थोड़ा सा डिटेल है, इसे पढ़ लीजिएगा. Tea mosquito bug, which was seen in news, are said to be prominently attack which crop? Cashew. Tea mosquito bug, Helopeltis antoni, have attacked acres of cashew crops in Odisha, Ganjam district. Climate change is one of the reasons behind the infestation. The bug generally infected the cashew plantation in South Indian state. The marked value of the crop is substantially reduced because of its warty appearance. The Odisha is the third largest state in cashew cultivation, production, processing in the country after Maharashtra and Andhra Pradesh. And so this is about the detail of. Thereafter, zero defect and zero effect certification scheme is associated with which union ministry? It is related to Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, MSME. Zero defect and zero effect ZED certification scheme
Basically, the first phase of the program will focus on manufacturing SMEs, while second would be those MSMEs in service sector. The number of parameters required for gold category Z certificate has been recently reduced from 50 to 20. Now, Kokborok is lingua franca of which state? Kokborok is the lingua franca of Tripura. Lingua franca is a language that is adopted as a common language between speaker whose native languages are different. तो lingua franca किसको बोला जाता है? उस भाषा को जो नेटिव लैंग्वेज नेटिव स्पीकर्स हैं वो दूसरी लैंग्वेज को भी इक्वली एक्सेप्ट करें और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन में यूज करें. Recently, CBSE announced Kokborok in its curriculum. A confederation of 56 tribal organizations in state hailed CBSE decision, while they called the Roman script for Kokborok Choba. This is in the backdrop of Union Home Minister's statement that Hindi would be made compulsory for all Northeastern and Devanagari script will be introduced for all languages without a script. Thereafter, who is the first Indian woman to climb peak above 8,000 meters? That is Priyanka Mohite. 30-year-old woman named Priyanka Mohite is now known as the India's first woman to climb 5 peaks above 8,000 meters. She has achieved this success after ascending Mount Kanchenjunga, third and also the third highest mountain on the planet. Mohite scaled the highest peak of the world, Mount Everest, and Mohite also received the Tenzing Norgay Adventure Award in 2020. Thereafter, the last question: which Union Ministry launched Bharat TAP initiative? It is the Ministry of Urban Housing and Urban Affairs. So, Ministry of Housing and Urban Affairs Minister launched the Bharat TAP initiative in Plumbex India exhibition. Bharat TAP initiative will provide low-flow sanitary ware at scale and thereby reduce water consumption at source considerably. Puri also launched Nirmal Jal Prayas initiative, which will work for saving 500 crores liter of water per year. So this is what the explanation and the number of questions. And I hope this must be helpful to all of you. And I will keep on bringing such tests to you all. And please be in touch with the current affairs, not only my sources, but with that of the other sources also. Thank you. And good night to all. Thank you, sir. Thank you, sir.